Hello to everyone, Jai Swaminarayan. Today we will continue chapter number 10, Trial Balance. Now friends, in this video we prepare trial balance according to the total method and balance method. उसके लिए मैंने यहाँ पे दो इलस्ट्रेशन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स लिए हैं, इलस्ट्रेशन 1 और इलस्ट्रेशन 2. Let's start. First method we use total method. Now let's see first illustration first. Total accounts of debit sides and credit sides from the books of Sri Dharma as on the 31st March 2015 are provide prepare a trial balance from it. It means कि हमें यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट बैलेंस दिया है अकाउंट्स का, उसका हम उपयोग करके श्री धर्मा का ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना है. ओके, सो हियर फर्स्ट इज गिवन कैपिटल अकाउंट. तो कैपिटल अकाउंट में यहाँ पे डेबिट बैलेंस कुछ नहीं है, पर क्रेडिट साइड का 90,000 है. ओके, देन ड्राइंग्स अकाउंट 20,000 का डेबिट साइड का एडिशन है, क्रेडिट साइड का उसमें कुछ नहीं है. देन प्रेम्स का अकाउंट है, परम का अकाउंट है, डेबिट साइड का एडिशन है 3,000 और क्रेडिट साइड का एडिशन है 9,500. देन करम्स का अकाउंट है, डेबिट साइड का टोटल है 4,000 और क्रेडिट साइड का 6,000. देन अस्मिता का अकाउंट है, क्रेडिट साइड का टोटल है 8,000, डेबिट साइड का टोटल है 2,000. देन खुशबू का अकाउंट है, तो डेबिट साइड का टोटल है 10,000, क्रेडिट साइड का टोटल है 3,000. देन सेठ एंड ब्रदर्स का अकाउंट है, तो उसका डेबिट साइड का टोटल है 9,000 और क्रेडिट साइड का टोटल है 20,000. देन आफ्टर कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट का डेबिट साइड का टोटल है 57,000 और क्रेडिट साइड का टोटल है 49,500. देन बैंक अकाउंट का डेबिट साइड का टोटल है 30,000 और क्रेडिट साइड का टोटल है 8,000. देन फर्नीचर का अकाउंट का डेबिट साइड का टोटल है 20,000 और क्रेडिट साइड का टोटल नहीं है. देन परचेज अकाउंट में भी डेबिट साइड का टोटल 25,000, क्रेडिट साइड का 0 है. देन सेल्स अकाउंट में डेबिट साइड का अकाउंट 0 है और क्रेडिट साइड का अकाउंट 28,000 है. देन आफ्टर सैलरी अकाउंट में डेबिट साइड का टोटल है 5,000 और क्रेडिट साइड का 0. बेसिस अकाउंट में भी डेबिट साइड का 6,000, क्रेडिट साइड का टोटल 0 है. देन स्टेशनरी अकाउंट में भी डेबिट साइड का टोटल 6,000 है और क्रेडिट साइड का 0 है. देन डिस्काउंट अकाउंट है, तो डेबिट साइड का अकाउंट का टोटल है 2,000 और क्रेडिट साइड का टोटल है 0. देन परचेज रिटर्न अकाउंट, तो उसका डेबिट साइड का टोटल 0 है और क्रेडिट साइड का टोटल 2,000 है. तो यहाँ पे ये हमारी न्यूमेरिकल सम्स की जो फिगर है वो फिनिश हुई. लेट्स सी हाउ टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन. So friend, first we write down their heading because of each and every trial balance has heading. So write down there the trial balance of Sri Dharma as on 31st March 2015. Okay. Then after we draw the general form, यानी कि कौन सा फॉर्म, statement form. Okay. So we draw here statement form, name of account LF, total of debit side of account, then total of credit sides of account, रुपीस में है दोनों. ओके, यानी कि हमें जो एग्जाम्पल में जो अकाउंट्स की डेबिट और क्रेडिट बैलेंस दिया है टोटल, वही हमें यहाँ पे राइट कर देनी है एज इट इज, उसमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं. ओके, और बाद में लास्ट में ओनली हमें एडिशन करना होता है. सो हियर फर्स्ट एज इट इज हम राइट करेंगे कैपिटल अकाउंट.
कि क्रेडिट साइड का टोटल राइट करेंगे 90,000। ड्राइंग्स अकाउंट का डेबिट साइड का टोटल है 20,000, क्रेडिट का 0 है। देन परम का अकाउंट की डेबिट साइड का टोटल है 3,000, क्रेडिट साइड का टोटल 9,500। देन करम्स का अकाउंट का डेबिट साइड का टोटल 4,000 और क्रेडिट साइड का टोटल 6,000। देन अश्मिता का है, वो भी हम राइट कर लेंगे 8,000, 2,000। खुशबू कौन है, खुशबू अकाउंट्स का है, खुशबू का अकाउंट्स है तो उसका भी टोटल 10,000 और 3,000 राइट कर लेंगे। देन सेठ ब्रदर्स का है जो टोटल एज इट इज हम राइट करेंगे 9,000 और 2,000। देन कैश अकाउंट का टोटल है 57,000, 49,500, वो राइट कर लेंगे। देन आफ्टर जो बैंक अकाउंट का टोटल है, डेबिट टोटल है 30,000 और क्रेडिट है 8,000, वो राइट कर लेंगे। देन फर्नीचर अकाउंट्स का डेबिट का टोटल है 20,000 और क्रेडिट का 0 है। देन परचेज अकाउंट का भी डेबिट बैलेंस है, यानी कि डेबिट अकाउंट है टोटल है 25,000 और क्रेडिट है 0। देन सेल्स अकाउंट का डेबिट टोटल 0 है बट क्रेडिट टोटल है 28,000। देन सैलरी अकाउंट का डेबिट टोटल है 5,000, क्रेडिट 0। देन वेजिस अकाउंट का डेबिट टोटल है 6,000 और क्रेडिट टोटल 0। देन स्टेशनरी अकाउंट का डेबिट टोटल है 1,000 और क्रेडिट है 0। देन डिस्काउंट अकाउंट का डेबिट टोटल है 2,000 और क्रेडिट टोटल 0 है। देन परचेज रिटर्न अकाउंट का डेबिट टोटल 0 है और क्रेडिट 2,000 है। देन आफ्टर वी मेकिंग हियर टोटल, यानी कि डेबिट द टोटल ऑफ डेबिट साइड्स ऑफ अकाउंट और टोटल ऑफ क्रेडिट साइड्स ऑफ अकाउंट, इन दोनों कॉलम का टोटल होता है 2 लाख रुपीज। यहाँ पे हमारा ये सम फिनिश होता है। हमें ट्रायल बैलेंस ऐसे ही उसमें बनाना होता है। सो ये ट्रायल बैलेंस पॉपुलर नहीं है। जो बैलेंस दिया है डेबिट का टोटल का, जो अकाउंट्स है, कोई एक अकाउंट है तो उसका 2 बैलेंस होता है, डेबिट टोटल और क्रेडिट का भी टोटल होता है, वो हमें एज इट इज यहाँ पे राइट कर देना होता है। ओके, नाउ वी प्रिपेयर trial balance according to balance method. In this method we use the difference of the total of debit sides and the total of credit sides of the account is disclosed in this trial balance. Let's see how to prepare trial balance according to balance method. इसके लिए हम illustration 2 देखेंगे। The following balance are extract from the books of Inder. From these prepare a trial balance as on 31st March 2015. तो यहाँ पे हमें इंदर की ट्रायल बैलेंस, जो अकाउंट की बैलेंस है उसका डिफरेंस दिया हुआ है। ओके, तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा और कौन सा अकाउंट डेबिट होगा। ओके, सो हियर कैपिटल, drawing account, debtors, creditors, cash, furniture, bank, commission received, bank commission, electricity expense, wages, salary, goods destroyed by fire. Then after the debit side, it means कि right sides पे दिया है 10% is government, securities, opening stock, purchase account, sales account, purchase return account, sales return account, goods withdraw for personal use, bank loan, discount allowed, discount received, currencies, loss due to fire, telephone expense, ये हमें दिया है। तो पहले हमें इसमें डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या कौन सा अकाउंट की कौन सी बैलेंस होगी। ओके, जैसे कि कैपिटल अकाउंट है तो उसकी क्रेडिट बैलेंस होती है, ड्राइंग अकाउंट है तो उसकी डेबिट बैलेंस होती है। तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सा अकाउंट की बैलेंस क्या होती है। इसके अगले जो चैप्टर था लेजर पोस्टिंग, उसमें हमने सीखा था एग्जाम्पल नंबर 14 में कि बैलेंस कैसे हम डिसाइड करते हैं।
Okay, let's start counting the answer. First we write down its heading, trial balance of Inder as on 31st March 2015. तो हमने ये पहले जो ट्रायल बैलेंस बनाया है वो स्टेट फॉर्म में बनाया है। ओके, स्टेटमेंट का जो फॉर्म है उसमें, यानी कि नेम ऑफ अकाउंट्स, देन एलएफ, देन डेबिट बैलेंस रुपीज में और क्रेडिट बैलेंस रुपीज में। ओके, सो हियर फर्स्ट वी टेक वन बाय वन बैलेंस, यानी कि वन बाय वन अकाउंट्स हम ले लेंगे। तो उसमें पहला अकाउंट है कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल अकाउंट्स की वी नो दैट ऑलवेज हैज क्रेडिट बैलेंस। ओके, so its amount write down in credit balance column. There is write down 2,10,400 rupees. Then drawing account, तो ड्राइंग अकाउंट की बैलेंस है डेबिट होती है, क्योंकि ड्राइंग्स ऑलवेज डेबिट बैलेंस। ओके, so its amount write down in debit column. Then debtors also debit balance. Okay, debtor has debit balance, so write down there the debits balance column 43,750. Then creditors, तो creditors की बैलेंस ऑलवेज क्रेडिट होती है, so write down in credit balance column 35,600. Then cash it means ke it is our assets, and which is our assets, it has debit balance. Okay, so those are our assets. It has debit balance. जो भी हमारी assets है वो डेबिट बैलेंस होती है। ओके, उसकी डेबिट बैलेंस होती है। सो यहाँ पे कैश हमारी असेट्स है, तो इट हैज डेबिट बैलेंस 88,050 रुपीज। देन फर्नीचर ऑल्सो अवर असेट्स, सो इट हैज डेबिट बैलेंस, सो राइट डाउन इन डेबिट बैलेंस कॉलम 25,000 रुपीज। देन बैंक बैलेंस ऑल्सो अवर assets, so it is debit balance, and it is right in debit balance column 39,900. Then commission received, here commission received it means it is our income, and income always credit. Okay, income का बैलेंस, कोई भी इनकम हो हमें तो उसका बैलेंस क्रेडिट ही होता है। so commission received it is our income, so its amount write down in credit balance column 1,500. Then bank commission, here debit balance because of it is our expense. Okay, so its amount write down in debit balance column 350 rupees. Then electricity expense always debit balance, so write down that debit balance amount 6,200. Then wages also our expense, and we know that expense always debit balance. Okay, expense has debit balance, so here wages is also debit balance, so its amount write down in debit balance column 1,500 rupees. Then next is salary also our expense, so it has debit balance, so its amount write down in debit balance column 5,000 rupees. Then good destroyed by fire, it means कि हमारा goods destroy हो गया फायर के कारण। ओके, यानी कि हमें लॉस हुआ। so goods destroyed by fire account is credit balance, because of here purchase account credit होगा उतनी रकम से। ओके, so here it has credit balance 15,000 rupees. Then after number 10 10% is government securities, it is our investments, and investments it is our assets, and assets has always debit balance, so 10% is government securities has debit balance 25,000 rupees. Okay, then opening stock,
ओपनिंग स्टॉक भी डेबिट बैलेंस ही होता है बिकॉज ऑफ इट इज अवर assets. So its amount write down in debit balance column 75,000. Then purchase account. Purchase account always debit balance होता है. ओके, परचेज डेबिट होता है तो सेल्स क्रेडिट होता है. सो परचेज अकाउंट्स की डेबिट बैलेंस होगी 73,250 रुपीज. देन सेल्स अकाउंट, जो परचेज डेबिट होता है तो सेल्स क्रेडिट उसका अपोजिट है. तो सेल्स अकाउंट की क्रेडिट बैलेंस होती है 1,06,000 रुपीज. देन परचेज रिटर्न अकाउंट, तो परचेज रिटर्न अकाउंट भी क्रेडिट होता है बिकॉज ऑफ परचेज डेबिट, तो परचेज रिटर्न क्रेडिट. इसमें माल हम वापस कर देते हैं, गुड्स वापस कर देते हैं, तो गुड्स गोज आउट, सो क्रेडिट 9,250 रुपीज. देन सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न में भी क्या होता है, माल वापस आता है. सो गुड्स कम्स इन अवर बिजनेस, सो इट इज डेबिट. एंड हम सिंपल भी याद रख सकते हैं कि परचेज अकाउंट डेबिट होता है तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट होता है. ओके, परचेज अकाउंट डेबिट तो परचेज रिटर्न क्रेडिट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट तो सेल्स रिटर्न डेबिट. ओके, सो सेल्स रिटर्न अकाउंट की जो अमाउंट है वो हम डेबिट अमाउंट कॉलम में राइट करेंगे 6,250 रुपीज. देन गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, इट इज ऑल्सो ड्रॉइंग एंड इट्स अ क्रेडिट इफेक्ट. ओके, बिकॉज ऑफ हम परचेज अकाउंट में से क्रेडिट करते हैं. देन bank loan it means ki it is our liabilities and we know that liabilities always credit balance. Okay, so 25,000 write down in credit balance column. Then discount allowed, discount allowed it means it is our expense and expense always debit balance, so discounts allowed amount write down in debit balance column 5,000 rupees. Then after discount received, discount allowed our expense, उसका opposite है discount received, it is our income. So income is credit balance. Okay, income has credit balance, so income's amount write down in credit balance column 1,500. Then courageous, courageous it is our expense. Okay, so it is recorded at the debit side and its balance also called debit balance, so its amount write down in debit balance amount column 1,000 rupees. Then loss due to fire, here loss due to fire it means उतना हमें नुकसान हुआ है, लॉस हुआ है, so it is debit. It has debit balance 3,000 rupees. Then telephone expense, expense it is debit. Okay, so its amount also write down in debit balance column. Then after हमने ये जो तीनों स्लाइड में डेबिट की कॉलम में और क्रेडिट की कॉलम में जो भी अमाउंट राइट के उसका एडिशन करेंगे. यदि दोनों एडिशन सेम आ गए तो आवर सम इज राइट अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल. ओके, 4,09,250 rupees write down both sides. Here our state form ट्रायल बैलेंस इज कंप्लीट, जो हमने स्टेट फॉर्म में स्टेटमेंट के फॉर्म में बनाया है. ओके, नाउ लेट्स सी हाउ टू प्रिपेयर अकाउंट फॉर्म ऑफ ट्रायल बैलेंस, यानी कि ट्रायल बैलेंस अकाउंट फॉर्म में कैसे प्रिपेयर करते हैं वो हम देखेंगे इसी इलस्ट्रेशन 1 को. ओके, so there is first balance given is capital account. Capital account का balance always credit होता है, so write down it is right sides, यानी कि credit balance के नीचे write करेंगे. amount की column में 2,000 2,10,400. Then drawing account, so we know that drawing account always debit balance, so write down it is debit sides 10,000 rupees. Then debtors also debit balance, so it also write down debit sides 43,750. Then creditors, creditors it has credit balance, so it is write down under the credit balance
35,600. Then cash. Cash always credit debit balance, so it is write down at the debit balance 88,050 rupees. Then furniture. Furniture also has debit balance because of it is our assets and its amount write down at the debit balance 25,000. Then bank. Bank also it is our assets, current assets, so it is recorded at the debit side 39,900 rupees. Then commission received. Commission received it is our income 1,500 rupees write down at the credit balance side. Then bank commission. Bank commission it is our expense, so it is recorded at the debit sides यानी कि in debit balance bank commission 350 rupees. Then electric expense also write down their debit balance 6,250. Then wages 1,500 rupees also write down there because of it is our expense. Okay. Then after salary 5,000 rupees also write down there because of it is our expense. Okay. Then goods destroyed by fire 15,000 it has credit balance, so it is recorded at the credit balance sides 15,000 rupees. Next 10% is government security 25,000 rupees, it is debit, so write down the debit balance 25,000 rupees. Then opening stock also has debit balance, so write down it also to their 75,000 rupees. Then purchase account also has debit balance, so write down its debit balance there 73,250. Then sales account always has credit balance, so write down their credit balance sides 1,06,000. Then purchase return account also it is credit, so write down their credit sides balance 9,250. Then sales return it is our debit balance, so it's recorded at the debit balance sides 6,250. Then goods withdraw for personal use it has credit balance, so it's write down it's a credit balance sides 5,000 rupees. Then bank loan also it is our liabilities, and liabilities always has credit balance, so bank loan recorded at the credit balance sides 25,000 rupees. Then discount allowed it is our expense, so expense account always has debit balance, so it is write down at the debit sides 5,000 rupees discount allowed. Then discount received it is our income, and income has always credit balance, so it's right at the credit balance sides income received यानी कि discount received 1,500 rupees. Okay. Then currencies it is our expense, so it is write down at the debit balance sides 1,000 rupees. Then loss due to fire also write down there because of this is our loss 3,000 rupees. Then telephone expense it is our expense account, so we know that expense account always has debit balance, so it's recorded in the trial balance at the debit balance sides 1,000 rupees. Then after its addition हम इसका टोटल करेंगे तो इसका टोटल आता है 4,09,250 rupees. Both sides it has a same total, so write down there, and here our sums is finished. Thank you and have a nice day.